हे गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई नो बहुत जल्दी है सुबह में। होल्ड ऑन, यू शुड सी मी राइट अबाउट नाउ। व्हाट्स अप? हाउ यू डूइंग? Yeah, I'm pretty excited to doing this amazing whole concept session with you. And हाँ, we changed things up. I was supposed to go live at 6 p.m. आज, but 11 बजे सुबह को, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है और आप लोग चाहते हैं वो मैच को बहुत एक्साइटमेंट में देखने के लिए। All right, go ahead. Breaks are as important as studying is. Hey Pulkit, how you doing? So let's get started right away. My name is Ashish Shekhar. I have been a part of BYQs since November of 2016. So I joined here as a JEE advanced teacher for physical chemistry. And over time, I've worked in the 4th to 10th space and a lot of other things. So of late, I've been taking sessions on the NEET channel, and I'd say back to the JEE channel. Oh, by the way, if you want to check out some of my other videos on JEE advanced content, there's a playlist. I'll share that with you. I teach Chem on Telegram. I can share that with you as well. ठीक है, सो आज से हम लोग शुरू करते हैं. यू कैन हियर मी एंड सी मी, राइट? आई हैवंट चेक दैट. कैन यू हियर मी, सी मी, सब कुछ दिख रहा है? या सो विल गेट स्टार्ट राइट अवे विद मोर कॉन्सेप्ट PYQs, बिकॉज ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, राइट? विल स्टार्ट विद दिस एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर. अगला सेशन इसके बाद एक और है, राइट? एट 12:30 वी आर गोइंग टू डू सॉलिड स्टेट and give me ideas as to what you want next week. Some students I checked with Discord folks, they wanted some sessions on thermodynamics, some of them wanted electrochemistry. So whatever you guys want. Yeah, just quickly checking. Stream is good. Yeah, stream is good. Healthy, everything is great. Okay, sweet. So how you doing? How you feeling right now about this? I know थोड़ा last minute है, and it's possible कि आप लोग are just waking up from slumber, but it's cool. थोड़ा सा करते हैं मोल कॉन्सेप्ट और तुरंत नींद खुल जाएगी. सो व्हाट्स हैपनिंग? पहला सवाल देखें. शैल वी लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन राइट अवे? हियर यू गो. राइट, सो व्हाट आई डू, बाय द वे, जस्ट अ बिट ऑफ दिस थिंग. आई विल शेयर द नोट्स ऑफ दिस सेशन विद यू गाइज राइट नाउ आफ्टर दिस ऑन टेलीग्राम. ठीक है, तो इफ यू गाइज वांट टू रेफर टू एनीथिंग, सब वहां पे मिलेगा. टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आई नो यू आर फेमिलियर विद ऑल ऑफ दिस, बट जस्ट अ मेन आइडिया कि ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप सुनिए मेरी बात एंड अंडरस्टैंड आइडियाज. सिंस दिस इज quite basic mole concept here, I feel you'll do well. So let's get started. पहले सवाल के साथ, let me quickly open my chat as well. Oh, hey, I didn't see this. Mohammad Nurain, what's up? Samyak, good morning. Yes, नाम बोलेंगे but सवाल तो आप solve करो. नाम जिसका चाहो बोलोगे. Yes, we'll do all of these things. We'll do ionic equilibrium, redox. It's good to see this. Hey Khyati, hi. Yeah, it's been a while since I've been on this channel. I think I taught you guys last in January. We did some sessions जब January में एग्जाम जस्ट हुआ था और आप लोग अप्रैल के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे. ओनली जनवरी एग्जाम जस्ट पहले. दैट्स व्हेन आई डिड सम सेशंस ऑन थर्मोडायनामिक्स एंड ऑल ऑफ दैट. खैर, एनीवे, आई एम प्रीटी श्योर वो लास्ट बैच था. आप लोग तो फ्रेश हैं. यू वांट टू गिव योर जेईई इन 2024, सो लेट्स गेट यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट. चलो सॉल्व करो. सवाल सर के ऊपर लिखा है मेरे. द वॉल्यूम इन ml of 0.1 molar AgNO3 required for complete precipitation of chloride ions present in 20 ml of 0.01 molar solution of, look at this scary compound, as silver chloride is what? Okay, so AgNO3 react करता है इसके साथ और क्लोराइड आयंस को प्रेसिपिटेट करता है AgCl. Okay, you've got to just identify एक मोल कंपाउंड में कितने मोल क्लोराइड आयंस निकलेंगे. So in a way ये थोड़ा सा आइडिया यूज कर रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, राइट? द फैक्ट दैट इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर से नहीं निकलते आयंस. इट्स the outside ones that come out, which is just these two that will come out. That's the starting point. Okay, try that out. Hey Lalit, how you doing? Oh, thanks Lalit for joining this. Lalit works with us. He's awesome. My God, Saturday ko aap aaye pe. Thank you Lalit. Thank you for joining this. He's the awesome mind behind everything that you see on maths. That with Bhumika ji. Yeah. Anyway, solve karo Mohammed. Hey Raja. Oh Raja. Are you from the NEET channel? But anyway, I guess I don't need from there. 6 ml, okay, is the answer that I've got from Samyak. Okay, good job on 6 ml. Shall we wait for some more time for you guys to solve this? I've highlighted the important things over here. Okay, this is very important in any JEE paper. Identify what are the key ideas और उस पे focus करो और जो noise है उसको हटा दो. A good way to do this when you're solving questions online or on paper is to just use a highlighter and do it. बाकी JEE exam में तो आदत पड़ जाएगी. JEE exam में सब नहीं करना पड़ेगा. But until the time that you build up to that exam, ये सब करो. So what's important here? 0.1 molar AgNO3 precipitate कर रहा है 20 ml of this. अच्छा, तो I can use this from equivalents. Okay, I like doing equivalents, or you can do this from the idea of mole concept. जैसा भी ठीक लगे. Are you still trying this? You are very excited. I'm excited. Well, Raja, try करो solve this question.
Shall I give you the solution? Yeah, let's get started. Since ये पहला सवाल है, I'll help you out with the solution. Next वाले में आप try करना. Although Samyak has already given me an answer, good job with that. The approach is take 1 mole of this compound. इस compound का 1 mole लीजिए, okay? And इसमें से clearly there are 2 chloride ions that are coming out. Okay, that's the first step. So I can do this from the idea of normality, or I can do molarity, जो भी चाहे कर सकते हैं. The reason why I choose to go the normality route is because life is much easier. Okay, I'll tell you what I mean. So if I say कि normality इसकी है 0.02 normal, right? किसकी? AgNO3 की. Because right now I'm focusing on AgNO3. This is the stuff that's reacting with this. Remember, this is not the normality, let me write that explicitly, not normality of the complex, okay? ये है हमारी normality of what? Of AgNO3, okay? इसमें से if I find the milli equivalents, again, since I'm doing this for the first time with you guys, I will talk about milli equivalents. हम लोग equivalents में milli equivalents बात करेंगे क्योंकि you get moles and you get equivalents and then you multiply with milliliter. So you get millimoles या फिर milli equivalent. ठीक है? तो find out milli equivalents and then use N1 V1 to N2 V2. Yes, this is the plan for 2025, 24, 25, 26. जब भी लिखना है JEE, this is very important for you because ये PYQs हैं JEE main के. ठीक है? My name in real is what my name is here. I'm not like an actor जिसके 2 नाम होते हैं. Ashish Shekhar, bro. ठीक है? And that's what you've got to do. So this is the best way to solve this. Do N1 V1 equal to N2 V2. Okay, so what's the normality of this? It's 0.2 times this thing. ठीक है? Do you get this? So the total number of milli equivalent is 0.4 milli equivalent. Do you guys see that? क्यों? क्योंकि यहाँ पे the main idea is, are you able to follow what's going on, guys? Is this okay? कि 0.4 milli equivalents हैं. So, Samyak, can you tell me how you got 6 ml? Help me with that, please. Help me with that. Yeah? What you've got going for you is this idea, okay? 20 ml of 0. Acha, my bad. This is the amount of this solution itself, not AgNO3. इसलिए यहाँ पे normality 0.02 normal लिखी है क्योंकि the molarity is 0.01 and n factor for this is simply going to be 2. ठीक है? Ignore what I said about a minute back over here. This is the normality of the complex. यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, ठीक है? Hold on. Where is this line here? एक second. This is the complex itself. ठीक है? ये हम लोग complex की बात कर रहे हैं. The normality है. And so complex का normality is going to be 0.02. The number of equivalents is simply going to be that times 20. Okay, which is 0.4 milli equivalent. Now we back calculate AgNO3 कितना निकालना है, right? Sir, 2 Cl minus ions, so millimoles of Cl minus is 6. Are you sure it's 0.6, Samyak? That's a good starting point, but 6 कैसे होगा? You've got 2 and into this, तो 0.4 होगा ना, 6 क्यों होगा? Have you also counted this chloride inside the coordination sphere? We can't count this. I see what Samyak did. It's a very good effort, but you can't count this. Do not count, can't count this Cl minus. Okay, you can't do that. So which is why you only account for the bahar wale Cl minus, and hence you get, okay, AgNO3 कितना होगा? 0.1, which is the molarity, same as normality. For AgNO3, molarity is equal to normality. 0.1 times x equals 0.4 milli equivalents, है ना? So x is simply 4 ml. Now you see क्यों मैंने idea लिया milli equivalent का? क्योंकि if you take milli equivalent, the answer that you get is going to be in ml. ठीक है? तो answer here is 4 ml. I see that कुछ लोग यहाँ पे हैं, there are a lot of people on the chat or watching it live, but chat में कोई कुछ बोल नहीं रहा है. It is possible that is because ये पहला सवाल ही थोड़ा भारी हो गया. I understand that. But Samyak, do you understand this? Is it okay how this is 4 ml and not 6 ml? Yeah? But good try. Good try. Shall we go on to the next question? Yeah? So, you want me to do a quick recap of this one? I will do that and then we'll go to the next one. So, you're supposed to find out the volume in ml of 0.1 molar AgNO3 required to completely precipitate this much of this solution. ठीक है? So you can do this by the mole route or the equivalent route. The reason I chose the equivalent route is because life is easier that way for me. आप चाहे तो mole route भी कर सकते हैं. Either way, the point is कि इसमें से निकलते हैं 2 chloride ion per mole. Okay, per mole you get 2 chloride ions and not 3. Yeah, Samyak, I hope you understand that, and everybody else is watching it later as well. So once you get that, then life is easy. अगर इसमें से एक मोल में से 2 निकल रहे हैं तो 0.01 times 20 में कितने निकलेंगे? 0.01 times 20 times 2. So that is just simply 4. Okay. So for what? 4 milli equivalents, or in this case 4 millimole also works. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वापस AgNO3 का n factor simply 1. So what I get here is 4 ml dividing this by 0.1. ठीक है? Cool? Cool. Not 4, 0.4. All right. Great. Let's go on to the next question.
a bit of a hiccup in the starting. I understand that. थोड़ा मुश्किल सवाल दे दिया मैंने starting में. I will make sure that I start off a little bit easy next time. But JEE main के PYQs है. It's not me who's making them. 1 gram of carbonate M2CO3 on treatment with excess HCl produces 0.01 mole of CO2. The molar mass of this is what? How do you do this one? So you're treating M2CO3, मतलब कोई metal carbonate है. It could be Na2CO3, could be anything. ठीक है. हमको molar mass इसका निकालना है. It could be anything. Could be anything. On treatment, excess HCl produces this much of CO2. So ये तो मुझे लग रहा है directly relating moles and masses stoichiometry वाला question है. Do you think we can do this? All right, good to know, Raja. Good to know you've understood this. You want to try this out? Take 10-15 seconds to figure it out. I'll wait. And yeah, IR, are you giving me the answer? I don't understand IR, what IR means. Sorry. I'm a little bit of a noob with lingo that goes around right now. So help me a little bit. Yeah. I'll give you the approach. You can start off from there. The simple thing is कि M2CO3 plus HCl gives you MCl2 plus CO2 plus sure H2O भी देता होगा HCl के साथ react करता है जो भी करता है right. So 1 gram gives you 0.01 mole. So you can do one of two things. You can either convert this back to, well, you can't actually convert this back to mole. No, you can't do that because you do not know, I don't know the mass, the molar mass. So how do I do that? If I don't have the molar mass, then I can't convert this back to mole. So it makes more sense to convert this to gram. इसको मैं अगर ग्राम में convert करूं, then I can, figure it out. Okay, try that out. Limiting reagent, LR, limiting reagent. Okay, sure. Okay, I get it. So Raja says no. Samyak says this is limiting reagent. Okay, I'm going to write that down. Thank you for that. In this case, limiting reagent concept की जरूरत नहीं है because limiting reagent is important when you have two competing things. यहाँ पे बस दिया है HCl, right? And HCl is, say, just what is used to react here. So 1 gram is 0.01 mole. How much is 1 mole, guys? That's all you've got to do. Yeah? क्योंकि look at this reaction. This is a balanced reaction. नहीं, ये तो balance है ही नहीं. Can you do this? Can we do this? Can we not do this? Is this reaction balanced? मुझे तो balance नहीं लग रही है. अच्छा, यहाँ पे अगर 2 डालूं तब बैलेंस होगा, यहाँ पे भी 2 डालना पड़ेगा, अब बैलेंस हो गई, राइट? अच्छा, बैलेंस करने के बाद भी, even after balancing, this relationship remains the same. So basically, 1 mole of CO2 is equivalent to 1 mole of M2CO3. So yes, this expression is valid. Do you follow this? ये जरूरी बात है. देखो, last question, I showed you how to do that with the idea of normality. Okay, and I said कि moles भी use कर सकते हो. And here we've taken a completely different approach. We're like, this one, let's do the balancing way. Because for me to be able to do normality, I need to know a couple of things which at this point zaruri nahi hai, right? If I just simply balance this equation, I get that the mole ratio is 1:1, so I can write this. Once I do this, it is not balanced. Shiva, Raja, how about now? Is it balanced right now? After I put this 2 over here and a 2 over here, is it balanced? No, it is still not balanced. It is still not balanced. So, okay. Then we'll put a 4 over here. Okay. If you put a 4 over here and we put a 2 over here, is it balanced now? No, it is still not balanced. So can we do this or not? Abhi bhi balance nahi hai. So Raja, how do you solve this question? How do you solve this question then? Agar balance nahi hai to. Think about it. Tell me what your approach is to this question. Let's know all of this and let's do this from scratch. How do you solve this question? Give me an idea. Yeah? I'll wait. It's okay. Time ki koi tension nahi hai. Tell me what you guys think. Yeah? We'll figure this out together. So, because this question came in the JEE exam, I'd like you to think about it and we'll get to the bottom of it together. Okay, that's the idea. What do you think? क्या लग रहा है आपको? Are you feeling confident about this or is this question a little scary? If you feel it's scary, tell me. I'll solve it for you. Or if you feel it's doable, वो कर भी लेंगे. I'll wait for you guys. What do you want to do? सोच के बताइए. Yeah? Just checking the chat. All right. We'll wait. So, how comfortable are you with mole concept? I didn't ask that. I know I just bang on. सीधे मैं शुरू कर दिया सवाल से ही. But are you guys, is mole concept something you feel simple है और आपको लगता है कि भाई ये तो भारी हो गया, this is crazy? Like what are you guys thinking? Huh? 1 gram of carbonate, M2CO3 on treatment HCl produces 0.01 mole of CO2. अच्छा. Seems like it's doable, but what is your thought on it? 2 HCl and 2 MCl2 से balance हो जाएगा. Okay, let me put that. 2 HCl and 2 MCl2 से balance हो जाएगा.
But if I do that, MCl2 nahi hoga. I think the problem is that it's going to be M and not MCl. It's not going to be MCl2. It does get balanced. Yes. Good. Thank you for that. It does get balanced with that. Yeah. So be careful about the whole reaction itself to start off with, right? 2 डालने से balance हो जाता है, but it will not form 2 MCl2, it will form MCl. View? Because look, if it is given that it's M2CO3, carbonate ions have a charge of 2 minus, right? So M must have a charge of +1. That's important to note over here. ठीक है? Once you do that, then this reaction itself, no, it's not your bad. It's my bad for tripping you up like this. I shouldn't confuse you guys. मैंने अपने मन से कुछ reaction लिख दिया, सही है कि गलत है, पता नहीं. But it's for you to figure out कि भाई इसको करना कैसे. Yes, exactly. It's just that, Ayush. It's as simple as that. Yeah, it's just 100. Yeah, you just divide both of them. MCl2, it should be MCl. Thank you for that. Absolutely. Right? Balance it by just putting the 2 over here and another 2 over here. And the whole thing is balanced. You can count, right? There are 3 of these, 2 plus 1, 3 of these. And H2 कितने हैं? H2 2 हैं, H2 भी 2 हैं यहाँ पे. Yeah, M भी 2 है. So it's all balanced. Yeah, all good. So the answer simply is going to be 0.01 gram is 0.01. So 1 mole. So 1 mole कितना होगा? It's simply going to be what? 1 by 0.01, which is 100 gram per mole. If you want to write down units, we can do that quickly. फिर से mole यहाँ पे हो गया, gram यहाँ पे हो गया. The answer is 100. Yeah, Ayush, good job. It's simply 100. Yeah, do you see that? It's 100 gram per mole. So actually, you know what the real question is? पुराना सवाल था कि 0.01186 is what came in, one of the older papers. What JEE Main did was they changed it, made it life easy and said, let's, let's just make it this. So the answer to that question was 84.3. If you look into this and do this, अरे 100 gram per mole में तो M कोई ऐसा metal है नहीं that forms this sort of thing, right? It is CaCO3 that has a mass of 100 gram per mole. But if you give that, then the reaction becomes a little complicated. खैर, ये सब कहानी में थोड़ा extra सुना रहा था as to how this question was made. But do you see this? How it is 100? Yes, Prashant, absolutely. Raja, good job, good work, everybody. सही है. अगला सवाल देखते हैं. पहले 2 सवाल हो गए. Okay, just 2 questions. Oh, we have a lot of time. A solution is prepared by adding 2 gram of X to 1 mole of water. Mass percent of X in the solution is what? Mass percent of X in the solution. So, how do you do this? Do you know how we can do this? Hey, Jeppeline, how are you doing? Hey, I see some neat folks here. That's awesome. That's very interesting. That's very interesting. How do you solve this question? Use the idea of what is mass percentage. Okay? Mass percent is the definition of mass of solute in 100 gram of solution. Now, I've done this multiple times in multiple places, whether it's for JEE or for NEET or even for 10th grade students, right? The definition stays the same. A lot of times, the definition that you mug, the students mug, is key, okay, it's the mass of solute in mass of solution into 100, right? You divide it by 100. And that dividing by 100 is the mathematical idea. The definition is mass of solute in 100 gram of solution. This is what mass percentage is. Sure. Okay? Do you understand that? 2 by 18 plus 2. Wow, Ayush is on fire. Ayush is on fire. Yeah. I'm going to agree with Ayush, and because he's got it, I'm just going to go ahead and tell you guys how that works. Solution is prepared by adding 2 gram of X to 1 mole of water. So 1 mole of water का mass क्या हुआ? 18 gram. Excellent work there. This is very straightforward, right? H2 में क्या है? 2 plus 16, which is 18 gram per mole, right? That's the molar mass. Once you have that, then that's all you've got to do. So mass of solute क्या है? 2 gram. Mass of solution क्या है? Well, solute plus solvent, right? Then you multiply by 100. क्यों? Because now my denominator is not 100. I know that there are 2 grams in 20 grams, but मुझे 100 grams में चाहिए. Hence, I multiply the whole thing by 100. Okay, 1 mole of mass of water in plus 2 gram, and that's how much? How much is that, guys? Is it 10%? It is 10%. Good job. Straightforward question, no? आनंद कौन सी लैंग्वेज में चाहिए? This is not bilingual class, मतलब हिंदी में बात करेंगे, बात कर लेंगे. But tell me, guys, honestly, exam तो इंग्लिश में लिखना है ना? तो numbers इंग्लिश में लिखे हैं. What if you want me to explain something हिंदी में, I can do that again. मैं फिर से पढ़ा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है. और इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली चीज नहीं है. फॉर्मूला लिखा है भाई, कर लो, आसान वाली चीज है. Yeah, exactly. It's just 10%. So here you go. This question was slightly direct, but I'm just trying to imbibe onto you कि देखिए ये mass percentage का idea ना, this is a definition. कितना mass है of solute in 100 gram of solution? It is just that when you calculate, you don't get 100 gram of solution. So what I've got here, see denominator, I've just only got 20 gram. So to convert that 20 gram into 100,
I do this division. When I do this division, I get acha. These many grams will be present per gram of solution. Then multiply with 100. So 100 में इतना होगा. Do you follow what the definition means? Give me a quick yes in the chat if you understand what this formula means. हाँ, AIM JEE 2025 मैं हूँ बायजूस ऐप पे. I've been teaching us since 2016, so you'll see a lot of my videos on the app, both in 11th 12th and also in 6 to 10. Yeah. ठीक है, समझ में आ गया. हम लोग प्यार से करेंगे, 5-6 सवाल करेंगे, but we'll do it properly so that you will never forget it. आनंद जरूर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है ना, प्लीज टेल मी, ये वाला बात फिर से बता दीजिए, हम बताएंगे. वी आर हियर टू हेल्प यू. ठीक है, ऑल राइट, स्वीट. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A metal chloride. This one here काफी interesting है. A metal chloride contains 55% of chlorine by weight. 100 ml vapors of the metal chloride STP weigh 0.57 gram. The molecular formula of the metal chloride is what? So there are two main concepts over here. Two main concepts. एक तो mass percentage दिया है. By weight मतलब कि mass percent, right? W by W percent. Then the next concept here is 100 ml vapors of the metal chloride STP weigh 0.57 gram. Remember, there is a relationship between mass and moles and volume. Well, specifically mass and mole का relationship obviously you know, but mole और volume का relationship है gases का. That's what you have to use to solve this. Why don't you try this one out? Samyak on the Byju's app. Byju's app पे lectures हैं. Lectures in the sense mostly in 11th 12th I have a lot of JEE questions that I have solved. Yeah, that's what I've been up to. Chlorine का AMU 35.5 आयुष 35.5. अरे यार मेरे से क्या पूछ रहे हो? ptable.org. When you're doing chemistry sessions, open this up हमेशा. अरे स्पेलिंग क्या है? रुको. ptable.org. हमेशा open this up whenever you're doing chemistry session. ठीक है? Yeah, but it's all right. Good question. Obviously you need that. Try this one out. How do you do this question? Look at the options. There's a hint there. The biggest hint is, look at this. There's only one atom of M in all of them. Okay, that's another big hint. So there are three things that we have that are hints to start off with. पहली चीज कि भाई mass percentage दिया हुआ है. Second thing कि vapors हैं, so you can relate the whole idea of okay, moles of this would be proportional to volume of the same thing क्योंकि it's a gas. And then mole से mass भी आप relate कर सकते हो. So there's one, those are something you can work out with. Third thing, all of this has just one atom of M. So how do you make it work? Samyak is giving the answer to be MCl2. Thank you, Samyak. Let me put a counter of 1 against MCl2. ठीक है, good stuff. Okay. Chloride mass 55.5. 35 you mean, Raja, right? MCl2 also Raja. Okay, good job. चलो देखते हैं इसको कैसे solve किया जाए. The basis. Now, when you do stoichiometry questions, more concept questions, it's important to know what the basis is. Basis का क्या मतलब हुआ? Basis का मतलब हुआ कि I can start this with 100 gram of metal chloride, or I can start with 1 mole of metal chloride, or I can take 100 ml of metal chloride. है ना? I can take any of these three things as my starting point. Now, आपकी मर्जी, आप जैसे भी करिए, you will get the same answer. ठीक है? But मैं क्या कर रहा हूं? I should clearly state in the starting that this is my basis. What is my basis? I am solving this whole question assuming कि मेरे हाथ में है 1 mole of compound. ठीक है? क्यों? Because मुझे if I get 1 mole of compound का mass, वही तो है molar mass, right? So that will help me get the molecular formula as well. That's the logic that I am using. समझ में आया? ठीक है? मैं 1 mole क्यों ले रहा हूं? Repeating once again. Why am I taking the basis to be 1 mole of a compound? Because if I find the mass of that, then that's going to be the molar mass itself. ठीक है? 1 mole of compound में, now whether I take 1 mole या 10 mole, mass percentage तो same ही होगा. 55% chloride, chlorine मतलब chlorine ही बोलते हैं, chloride छोड़ दो, chlorine, and 45% M. Okay, MCl2 Ayush, good job. And on fire, easy dubs, yeah. So MClX has 1 atom of M is what we've already done, and this N proportional to V, we can given the mass, we can find out the number of moles and volume of MClX. Okay, let's do that. ये तो दिया हुआ है, 100 ml तो दिया हुआ है, ठीक है? 100 ml दिया हुआ है, weighs 0.757 gram. Now if I backtrack and get कि 1 mole कितना होगा, let's do that. Right? So 1 mole
is supposed to be 22.4 liter. Yeah, I know now you go 22.7 liter also if you take it at bar, right? If you take it in atmosphere as the pressure, you get either. But दोनों ले सकते हो, इस क्वेश्चन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. I'll show you right now. So 22.4 liters is 1 mole. I have been given just 100 ml. So कितना होगा मास इसका? तो इसमें कितने मोल होंगे? First you find that out. Okay. Then you get, oh, these many moles must have a mass of 0.57 gram because that is given in the question. Then backtrack. Oh, itne mole is 0.57 gram. So 1 mole is how much? You will notice that I have written this is millimole क्योंकि I have volume in milliliter. Okay, तो इसलिए मैंने यहाँ पे millimole लिखा है. तो 1 mole कितना होगा? 0.57 by 100 times 22.4 into 1000. Again accounting for that millimole being converted back to mole. ठीक है? Is this okay? ये कोई मैथमेटिकल ट्रिकरी नहीं है. जस्ट ये सवाल करने का अंदाज है. मे बी यू आर मोर कंफर्टेबल बाय नॉट पुटिंग मिली एंड ऑल. आप चाहते हैं भाई हमको नहीं लिखना है. आई वुड रादर जस्ट लाइक 0.1 by 22.4. लिख लो यार, कोई चक्कर नहीं है, जो आपको ठीक लगे, राइट? 0.1 by 22.4 दैट्स द सेम एज दिस. ये चलेगा, आपको जो ठीक लगे यू डू. ठीक है? इज जस्ट दैट मुझे लगता है कि ये आसान है, तो आई एम डूइंग इट दिस वे. ओके, कूल. Now, once you do this, you get the mass to be 127.6. Yes, Anand, these are PYQs. That is the plan, right? PYQs ही हम लोग कर रहे हैं सिर्फ. आज के लिए तो सिर्फ PYQs ही कर रहे हैं. But I'll be honest with you. I have picked the PYQs that are slightly harder than they are above the level of regular JEE main. मतलब छाट के चुन के ऐसे सवाल लाया हूं जो थोड़े मुश्किल हैं, right? Almost entirely sure कि इससे आसान सवाल आएंगे in the actual JEE paper. ठीक है? I've picked just 5 or 6 questions for this session because मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ. I also have a JEE advanced question for you. Yeah, if we get to it, अगर if time permits, we'll also do that, right? Because my goal is to give you confidence कि आप कुछ भी कर सकते हो. ये JEE main, JEE advanced is just a tag. If you know the basics, you will solve any question, and I'm here to help you do that. ठीक है? Cool. Okay. All right. Sweet. So, did you guys get the mass to be 127.6? या अगर ये नहीं हुआ तो इफ यू टेक 22.7 तो कितना आएगा देखो, उससे भी ट्राई कर लेते हैं. अगर 22.7 लिया मैंने तो क्या होगा? 0.57 into 22.7. या मैं चीटिंग कर रहा हूं, आई कैन यूज अ कैलकुलेटर. into 10, राइट? देन इफ यू टेक 129.39 आएगा, वो भी लिख देते हैं. अगर ये लो देन द मास विल बी 129.39. ओके, दिस विल बी ग्राम ऑफ पर मोल, राइट? सो लेट मी राइट द यूनिट डाउन, ग्राम पर मोल. ये आ गया. ठीक है, लेट्स मूव दैट बैक अप. इसमें कितना क्लोरीन होगा ये निकालना है. ओके, 127.6 टाइम्स दिस बाय दिस. 55% क्लोरीन है तो इसलिए इनटू 55 by 100. दैट्स इट. एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 71. तो हेंस हो गए इसके 2 एटम. इज दिस ऑल राइट? इट्स ऑल राइट, रेक? ए, इज दैट, आर यू Naruto? I can't tell anymore. No, that's One Piece guy, right? All right. Khair, Naruto as in from a different channel. But anyway, do you follow how this is 2 atoms? Yeah. I know everybody in the chat told me that MCl2 is answer, but ये लोग active बंदे हैं, इन लोग ने solve कर लिया सवाल. But if you're lurking in the chat and you feel like ये नहीं समझ में आ रहा है, तब भी just ping and say कि can you explain? That's also good with me. Yeah, all right, ठीक है, cool. बड़ा कोई अभी आया बोला फिर से पूरा explain करो तो नहीं होना. Okay, watch the video फिर से. Cool. अगला सवाल देखा जाए. Here it is. The mole fraction of urea in an aqueous urea solution containing 900 gram of water is 0.05. Okay. Mole fraction of urea in aqueous urea solution that has 900 gram pani is 0.05. If the density of solution is this much, molarity of urea क्या होगा? काफी ट्विस्टेड सवाल लग रहा है ना. 3-4 चीजें दी गई हैं. देखो मोलैरिटी होती क्या है? मोलैरिटी इज मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑब्वियसली, राइट? यूरिया तो सॉलिड होता है तो सॉलिड वॉल्यूम मायने रखता नहीं है. सो मोल बाय वॉल्यूम, यहां तो ना तो मोल दिया है ना तो वॉल्यूम दिया है. यू डोंट नो मोल, यू डोंट नो वॉल्यूम, बट यू नो मोल फ्रैक्शन एंड यू नो डेंसिटी. दैट्स द हिंट. इफ यू नो मोल फ्रैक्शन यू कैन गेट मोल्स. इफ यू नो डेंसिटी यू कैन गेट वॉल्यूम. हाउ? बिकॉज ये 900 ग्राम दिया है ना. यू नो द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया. जल्दी बोल रहा हूं क्या? सब लिख देते हैं. देवाशीष आस्किंग द रियल क्वेश्चंस. इजी है सम्यक. गुड डूड, गुड. इजी है तो बहुत बढ़िया बात है. चलो ट्राई करो. आई हैव हाईलाइटेड दिस, आई हैव थिन स्लाइस दिस. या कोई भी सवाल हो उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें आइडेंटिफाई करो. दैट्स जस्ट कॉल्ड थिन स्लाइसिंग. फैंसी वर्ड्स, बट डू दैट. व्हाट्स इंपॉर्टेंट हियर? या 3 थिंग्स.
know what is being asked for. That's point number one. Molarity say you need mole and you need volume. Both I don't have. But mole I can get from this data point and this data point, from both of this. Let me put colors over here. Okay, mole are from both of these. Okay. What about volume? Volume I will get from this mass and this, मतलब total mass and this. ठीक है, density. That's simple as that. देवाशीष क्या मालूम भाई, अगर अभी सिलेबस रिड्यूस किया दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. अभी तो ऑलरेडी अक्टूबर चल रहा है, आपका एग्जाम जनवरी एंड में है. अगर सिलेबस रिड्यूस करेंगे काफी पैनिक होगा. आई होप नॉट, बट अगर करेंगे तो वी आर हियर टू हेल्प यू. काम ही तो ये हमारा, वी हेल्प यू. हे भाग्य, हाउ यू डूइंग? फ्रॉम डेंसिटी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो व्हाट्स द अप्रोच टू अ क्वेश्चन लाइक दिस? फिर से मैं बोल रहा हूं, राइट, लिख रहा हूं. लेट्स राइट इट डाउन. बोला तो काफी बार, लिख लेते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया दिया हुआ है, मास ऑफ पानी दिया हुआ है, ठीक है. use the density of solution to get the volume and calculate molarity. It's as simple as that. Badhiya man, having a great time as well. Amazing being back here teaching, although a little bit unplanned. हम लोग करने वाले शाम को 6 बजे, but भाई India Pakistan match and all, so we are a little early, little नहीं 7 घंटा early, but it's all right. 2.6 mole of urea is what Ayush is saying. Do you guys agree with what Ayush is saying? Okay, how did Ayush get there? How did he get there? Let's identify that. ठीक है, अगर mole fraction urea के है 0.5, mass of water is 900 grams. So the basis of this question is what? The basis I will take to be this. Because if I have the basis to be this, which is 900 gram of water, then I can say, cha, 900 gram water is 0.95 moles. 0.95 mole fraction, not moles. 0.95 mole fraction. 900 gram का जितना ही मोल था, that you can get, 900 by 18, that's 20. So 20 moles is 0.95 mole fraction. तो 0.5 कितना, 0.05 कितना होगा? है ना? Samyak also agreeing with Ayush. मतलब you guys must be right. Good job, good job. How did Samyak and Ayush get there? That's what I'm trying to talk about, right? 60 into 2. Total mass. Yes, on fire, Ayush, on fire. So 0.95 of water and 0.05 of urea. Well, if you have 1 mole of stuff, right? This is just shorthand, भाई. इसको तुम ज़्यादा seriously मत लो. This is just helping you get to the answer, which is what? देखो, 900 ग्राम में कितना मोल हो गया? 50 मोल हो गया. 20 नहीं, sorry, 50. My math is weak. 90 by 18 is 50, not 20. Sorry about that. 50 मोल plus कितना यूरिया? कितना यूरिया? If 50 mole is 95, then 0.05 is how much? It's as simple as that, right? So I'm going one step further and saying what 2.63 calculate mat karo. You're right, you may be right. I'll just calculate. But you see, I'm being lazy. Be lazy. It is good to be lazy. Lazy smart is better than hardworking and foolish. No, not hardworking. Hardworking is a positive thing. But donkey work is not good. Don't do donkey work. ठीक है, ये है donkey work 2.63. Don't do it. What do? Leave it as 50 by 19. I'll tell you why. We'll do that donkey work in the end. See, I'm just saying these fancy things just to not to be rude to you. But इसलिए बार-बार I'm using strong words because I want this to get into your head. Calculations end में करो, substitution end में करो. Leave everything as a fraction right now. Okay? Okay. No to donkey work. Yes. You guys catch on fast. Beautiful. Hey, little Kaksha. Love you too, man. Love you too. So 50 by 19 वहीं पे रखो. Mass of moles of urea 50 by 19. Okay, cool. Volume कितना होगा solution का? Total mass by density. ये ठीक लग रहा है? हाँ ना? Density is what? Mass by volume. तो volume is going to be mass by density. यही लिखा है. ठीक है? Nothing fancy. हाँ, अब इसको कैलकुलेट किया जाए. कोई बोल रहा था टोटल मास is 60 into 2.6 plus 900. Yes, absolutely right. The only thing I will do here is कि I will leave it as 50 by 19 into 60 by 19 and I will put this, write it like this. That's it. You're absolutely right. 3.0000. अच्छा Ayush. Now, are you sure it's 3.000? Are you sure it's that? Now, just see मैंने यहाँ पे क्या लिखा है. You see what I've written over here. उसको अब कैलकुलेटर में डाल के देखो, खुद कैलकुलेट कर लो जो भी ठीक लगे. 900 plus 50 by 19 into 60, correct? Divided by 1.2. आया 881. है, रुको, हमने कुछ फंकी किया है. 900 प्लस मैंने कैलकुलेटर में गड़बड़ी किया. लुक्स लाइक इट. टोटल मास क्या आ रहा था आप लोगों का? 0.105. ओके, लेट्स सी. खैर उसको भी लिख देते हैं. आई डोंट हैव टू कैलकुलेट दिस. आई एम ट्राइंग टू से कि इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. आयुष, व्हाट इज 3? सम्यक, व्हाट इज 0.0? कैलकुलेशन इज वियर्ड, मालूम है, बट देखो
बेसिक कैलकुलेटर आपको दिया जाता है इन जेई, दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन जेई एंड नीट, राइट? जेई मेन में इज ऑनलाइन, सो यू हैव दैट सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है? इसलिए मैं बार बार बोलता हूं स्टूडेंट्स को कि टेक टेस्ट, आप ऑनलाइन टेस्टिंग एनवायरमेंट में टेस्ट लीजिए। वन पार्ट इज स्टडिंग स्टडिंग स्टडिंग, बहुत किए हमने, किए 300 सवाल एक दिन में, बहुत अच्छी बात है, बट यू ऑल्सो हैव टू टेक टेस्ट, ओके? टेस्टिंग एनवायरमेंट का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। आंसर इज 3, 3 इज जवाब। यू टेक टेस्ट, दैट्स गुड, भाग्य, awesome, awesome. No use calculators, but you have that basic calculator, right? JEE main में वो basic calculation का होता है। 3 है, ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं, देखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल गया, ये मोलैरिटी क्या होगी, देखो 19 हो गया, कैंसिल। दैट्स व्हाई आई सेड कीप इट, दैट इज व्हाई आई सेड प्लीज कीप द 19, डोंट लेट इट गो अवे, राइट? हाउ डू आई डू दिस? दिस इज मोलैरिटी इज व्हाट, 50/19 divided by volume, which is this. Now if I put this in a calculator, what do I get? 50 into 1.2 divided by 20.1. देखो मुझे मिला 2.99. I mean ठीक है, I think चलता है। I really hope JEE main is not going to mess with you on this. It is 2.99 and 3. Yeah, be prepared for the worst calculations. Yeah, what I got is 2.99. I really hope इस सवाल में अगर JEE did not expect 3 except 3 is the answer, life would be very difficult. खैर, मजा आ रहा है कि नहीं? See, we are going, हम लोग बाल की खाल इसलिए उधेड़ रहे हैं because that is important. You need to know the inside out of each question to be able to solve any question that comes. ठीक है? उसको जो है जल्दी तो करना है, but हम लोग किसी जल्दी में नहीं है. We are in the learning mode. जल्दी वाला हम लोग टेस्ट में करेंगे. This is learning. दो चीजें होती है ना, fancy words, formative, summative, assessment, ये सब चीजें जो भी है, हम लोग अभी साथ में कर रहे हैं, प्यार से सीख रहे हैं. ओके? इसमें क्या कैलकुलेटर? देखो आयुष ऑन फायर, इसमें क्या कैलकुलेटर? ठीक है, 2.99 या फिर 3. Shall we do another question? Do we have time for another question? We have a lot of time. एक और सवाल देखते हैं. An organic compound gives 0.220 gram of CO2 and 0.126 gram of H2O on complete combustion. This is one of those fun ones. This is one of those fun ones. मैं आपको बताया था, हिंट दिया था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं लाया हूं मैं आपके लिए, तो सोचना बिफोर यू गिव द आंसर टू दिस. ये सारे, अरे भाग्य, ये सारे ही जेई के पीवाईक्यूज है. दैट्स द नेम ऑफ सेशन, राइट? पीवाईक्यूज, मोल कॉन्सेप्ट, सारे जेई के. कल मॉक है. इट्स ओके, सम्यक नहीं देख पाओगे तो क्या है, बाद में देख लेना यार. लाइफ में बहुत चीजें होती हैं जो यू हैव टू टेक हार्ड कॉल्स एंड इट्स गुड टू स्टार्ट अर्ली. यू हैव डन दिस फ्यू डेज. देखो भाग्य, चलो साथ में करते हैं, जल्दी करते हैं. भाग्य, व्हाट इज द आंसर यू गॉट? परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 24, द परसेंटेज हाइड्रोजन क्या होगा, राइट? नाउ द क्विक थिंग टू डू, सबसे जल्दी व्हाट आई हैव सीन स्टूडेंट्स टू डू, अरे यार इसमें क्या दिमाग लगाना है, कुछ कुछ मास वास दिया है, डोंट वरी. कार्बन 24 मतलब हाइड्रोजन 76. हाइड्रोजन इज नॉट 76. हाइड्रोजन इज नॉट 76. प्लीज डोंट से 76. ठीक है? बिकॉज यार इट वेरी क्लियरली सेज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड will have carbon, have hydrogen, it could have nitrogen, it could have sulfur, it could have oxygen, it could have whatever else. बहुत चीजें हो सकती है उसमें, है ना? आंसर इज 56. भाग्या. सही है ब्रो. we'll see what the answer is. अच्छा आपने 76 नहीं बोला. If you were to say 76, I was like nah, but cool. अच्छा है, if good, it's good you have solved it. So how do you solve a question like this? How do you start a question like this? If I am telling you कि इतना, so go without any baggage. Okay, let's do it from first principles. देखो, मैंने एक अजीब सी इक्वेशन लिख दी है, अजीब सी इक्वेशन, राइट? कि CXHY तो है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कुछ M हो सकता है, M could be नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ और भी हो सकता है. आई डोंट नो, आई डू नॉट नो. और क्या है? आई नो कार्बन हाइड्रोजन है, could also have other things. I honestly don't have any idea. But what I do know is ये जो कार्बन जो आया सिर्फ इधर से आया, हाइड्रोजन आया सिर्फ इधर से आया. ठीक है? That's the main idea that I'm going to do this. Okay, so कितने मोल है कार्बन के हाइड्रोजन में? Once I do that, then using this percentage of carbon, if I get मोल इतने हैं कार्बन के, इतने मोल मतलब इतना मास, मतलब इतना परसेंटेज. ओ, तो इतना मास हाइड्रोजन का इतना मोल होगा और इतना परसेंटेज होगा. That's all. That's all. That's all. Yes, भाग्य. Try it out. But आपका आंसर थोड़ा सा, you have good muscle memory, but try करके देखो, solve the question भाग्य. You'll see that it's slightly different from what you've got there. Slightly different. Khair, I'll help you along with this because again, I feel this is not that straightforward a question unless you identify this. ये पहली चीज if you identify, which is okay boss, इसमें और भी चीजें हो सकती हैं. If you don't identify that, you can get lost in the woods very quickly. Lost in the woods, fancy way of saying कि भाई गया, सवाल गया. Don't spend time on this one.
और आजकल तो भाई, पहले आई रिमेंबर एट वन पॉइंट टाइम इंटीजर के नेगेटिव मार्क्स नहीं होते थे, राइट? अभी इंटीजर के नेगेटिव मार्क्स होते हैं, एम आई राइट देयर? सो प्लीज नो गेस वर्क, जेई में नेवर गेस वर्क। मालूम है तो करो, नहीं मालूम है तो भाई छोड़ दो। डोंट डू एनी गेस वर्क। एजुकेटेड गेस एंड ऑल ना, वो जो लोग करते हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद करते हैं। प्लीज डोंट गेस इन जेई। ओके, खैर, get moles of carbon and hydrogen using mass percentage, get molar mass of the whole compound, then you get hydrogen percentage. That's, हाँ, गेस करना नहीं चाहिए भागे, गेस गेस की बात ही नहीं है। लाइफ, बी श्योर, बी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू डिजर्व यू विल गेट यार। इट्स ओके। हमारा भगवद गीता में लिखा है, our goal is to try, we keep trying, process is important, result is not important. Okay, I firmly believe in that. खैर, 0.22 ग्राम ऑफ दिस, 0.126 ग्राम ऑफ दिस, तो इसमें कितने मोल हुए कार्बन के? 0.22 डिवाइड बाय 44। ओके, व्हाई डिड आई डू दिस? 44 इज द मोलर मास ऑफ CO2। ये सब आई होप इज क्लियर ना, इसमें कोई फैंसी बात नहीं हो रही है। आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन क्विकली। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो भाई थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, क्या बोलूं, ठीक है? दिस इज 18 ग्राम पर मोल, राइट? एंड लुक, द मोल ऑफ हाइड्रोजन आई हैव पुट इज टाइम्स 2। क्यों? क्योंकि 1 मोल पानी हैज 2 मोल H। आई नो ये बहुत ऑब्वियस है, बट जल्दी जल्दी करने में ये चीजें मिस हो जाती हैं, जल्दी जल्दी करने में ये चीजें मिस हो जाती हैं। ओके, 0.06 CO2 एंड 0.014 H2O। ठीक है, मैं फिर से यही बोल रहा हूं कि ये क्या हुआ तुमने आयुष? तुरंत हटा दिया आयुष ने जैसे हमने देखा ये। सो इन दिस केस यू कैन कैंसल थिंग्स आउट। हाउ? देखो, 7 से डिवाइड करो, नहीं 7 से नहीं, कैसे करेंगे? 6, 7, 8, 9। यू नो दैट 9 वाला टेस्ट ना, मतलब 9 से डिविजिबल है 2 एंड 0.14, तो 2 और 2 गया, 0.14 हो गया, है ना? राइट? सो 0.14 हो, क्या हुआ? नहीं, 0.014 हुआ, नॉट 0.14, 0.014 हुआ इधर, और इधर कितना हुआ? 1/2 टाइम्स 1/100, राइट? सो 1/100, हाँ ठीक है, 1/2 टाइम्स 1/100, मतलब ये हो गया 5 × 10⁻³ और ये हो गया 14 × 10⁻³, करेक्ट? देखो, आदत डालो ये करने की। दिस विल हेल्प यू इन इंजीनियरिंग ऑल्सो, वेदर यू डू इंजीनियरिंग, यू डू साइंस, व्हाटएवर। नंबर और एक्सपोनेंट लिखो, पॉइंट के यार कंफ्यूज जाता है आदमी। 0.01, 0.001 मिस्टेक हो सकती है ना? गेट इनटू द हैबिट ऑफ राइटिंग एक्सपोनेंट्स, लाइफ विल बी इनफाइनाइटली इजियर। नहीं तो कॉलेज आके आप लोग रो दोगे, ठीक है? सो प्लीज राइट इट लाइक दिस। यू मे फील लाइक अरे यार करने देना सवाल, जैसे कर रहा हूं करो यार, करो। आई एम जस्ट टीचिंग यू बेस्ट हाइजीन प्रैक्टिसेस आल्सो अलोंग द वे। बेस्ट हाइजीन भी साथ में हम लोग सीख रहे हैं। व्हाट इज द बेस्ट हाइजीन? राइट इट एक्सपोनेंट्स, नंबर और एक्सपोनेंट अलग अलग क्लीनली रखो, ठीक है? नाउ दैट वी हैव डन दैट, 56 आयुष, ठीक है, देखते हैं 56 है कि नहीं। सो अगर 5 × 10⁻³ मोल है तो मास क्या होगा? दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट नेक्स्ट। इसका मास क्या होगा, इसका मास क्या होगा? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फिगर आउट। ओके, so the mass of carbon is 16 × 10⁻³, H is 14 × 10⁻³। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन इज 12 ग्राम पर मोल, हाइड्रोजन इज 1 ग्राम पर मोल। ओके, कूल, ओके, ठीक है। सो लुक्स लाइक सम ऑफ यू हैव फिगर आउट द आंसर। मधु, हाउ आर यू डूइंग? ट्राई कर रहे हो इसको? तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 24%, बट एक्चुअल मास है इतना 16 × 10⁻³ या फिर 60 मिलीग्राम भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट मिली माइक्रो थिंग। इफ यू आर नॉट, देन इट्स ओके, 10⁻³ भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो मास ऑफ C बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 इज इक्वल टू दिस। ओके ओके ओके, तो कंपाउंड का मास कितना हुआ? कंपाउंड का मास हम लोग इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, बाय दिस सिंपल थिंग। आई एम जस्ट पुटिंग दिस टू योर साइड। 24% इज दिस मास बाय दिस मास इनटू 100, तो मास ऑफ कंपाउंड इज 0.25 ग्राम। मोलार मास नहीं, मास ऑफ कंपाउंड। क्या जबरदस्ती मोलार मास मत लिख देना, ठीक है? आई एम टेकिंग मास ऑफ कार्बन भाई, तो मोलार मास तो नहीं आएगा ना। इफ आई डू मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, आई गेट द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। दैट इज व्हाट आई यूज। सो द मास ऑफ कंपाउंड इज 0.25 ग्राम। ओके, ऑलराइट। आयुष गेटिंग इम्पेशेंट, है कि नहीं आंसर 56? या विल टेक अ मिनट टू गेट देयर। अब तुम बताओ, है कि नहीं आंसर 56? अब तुम बताओ यार, गुप्ता साहब, प्रणाम, या मैम, माफ करिएगा। सो व्हाट इज द आंसर हियर? अब और कितना हैंड होल्डिंग करूं दोस्तों? कर लो ना यार। 14 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 250 × 10⁻³ इनटू 100, ये 56% हुआ क्या? सेल्फ फेथ,
56 भाग गया भाई, लिख दिया इधर अभी। इन व्हाट यूनिवर्स इज दिस 56? इट विल बी 5.6 ना। मैं इतनी देर से कहानी इसलिए बोल रहा हूं कि दोस्तों ध्यान से करो, प्लीज ध्यान से करो, ठीक है। 14/250 कितना होता है? 0.056 इंटू 100 कितना होता है? 5.6 है ना? 5.6। सो इज इट 56 और इज इट 5.6 गाइस? फाइनल आंसर 56 है, पक्का? सोच के बताओ। I don't know. I've got 5.6. Oh, yes. Good job. Lovely, 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 lovely. Thank you. You guys are awake. You guys are awake. I love it. बढ़िया, सम्यक and भाग्य and आयुष। Yes, yes, yes. अरे यार, यही तो पॉइंट है। अगर लोग नहीं पढ़ते हैं तो आंसर 5.6 मार्क करके आ जाएंगे यार। That's what I'm trying to say. And thank you. You're all beautiful students. Sarvan Ram, absolutely correct. You're all great. 5.6 is a percentage. But question में क्या पूछा है? ध्यान से पढ़ो। Into 10⁻1 लिखा है तो 56 होना चाहिए। यार, you students are brilliant यार। तुम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। You guys are amazing. I like it. जितना भी रैंडम हरकत करो तब भी you are stuck to your, यही आंसर। अच्छी बात है। This is the way. This is the way. Be confident. And I'm loving this. You're a great audience. I'm not just saying this. भाई सही है। You are amazing. Absolutely. खैर, चलो अभी बचे हैं 12 मिनट, राइट? एंड डू यू वांट टू टेक ऑन अ जेईई एडवांस क्वेश्चन? आई थिंक यू डू। आई थिंक वी विल बी एबल टू डू इट। कर लेते हैं, है ना? आई हैड दिस एज अ बोनस क्वेश्चन, सीइंग कि बाकी अगर हो गए तो ये भी कर लेंगे। लुक्स लाइक यू आर ऑल अ ग्रेट क्राउड एंड यू हैव अर्न्ड योर राइट टू अ जेईई एडवांस क्वेश्चन। ये वाला सवाल किया है क्या? नहीं किया तो इसको साथ में करते हैं। फैंसी चीजें दी गई है। To check the principle of multiple proportions, a series of pure binary compounds P, M, Q, N were analyzed and their composition is tabulated below. The correct options are. This is a PYQ. This is a PYQ from JEE Advanced. हाँ, yeah, absolutely. सम्यक. We'll do those also. सब करेंगे, सब करेंगे। बहुत अच्छा गाना गाया। अच्छा, अरे you are Mr. क्या बोलते हैं? समोसा from Discord. All right, ठीक है। चलो। Yeah, sure. Ayush, come back and check this out. इसको जल्दी से ट्राई करते हैं। Look, there are 4 broad things given over here. 4 broad things मतलब कि 3 कंपाउंड्स के बारे में एक चीज दी गई है, your weight percentage। मतलब we will use this. We will use the definition of weight percentage. Weight percentage मतलब कि mass of P divided by mass of compound. Okay, that is what this is. तो individual mass divided by whole mass. That's what this is. दूसरी चीज क्या है कि देखो 4 पॉइंट्स हैं, बट इन 4 पॉइंट्स में मेन चीज क्या है? फॉर्मूला दिया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट्स पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 इज मास दिया है। ओके, सो मास है, फॉर्मूला है, वेट परसेंटेज है, दीज आर 3 थिंग्स। और चौथी चीज क्या है? दैट्स इट। आई थिंक दीज 3 थिंग्स आर देयर। या ये 3 चीजें हैं। अब इसको करोगे कैसे? हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस? हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सो हाउ डू वी स्टार्ट? कैन यू गिव मी अ हिंट? आप लोग मुझे बताइए। आई नो मेरे सर के पीछे कुछ है, कुछ लिखा हुआ है, वो भी पढ़ेंगे। डोंट वरी, we'll look at it. I think I'll remove myself for a second here so you can read this better, right? यार सवाल इतना बड़ा है, मैं क्या करूं? बाइनरी कंपाउंड इज अ कंपाउंड मेड ऑफ जस्ट 2 एलिमेंट्स। आयुष, नवीन त्रिवेदी जी, वेलकम। सवाल पढ़ लो और बताओ इसको शुरू कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू यू भाई इसको शुरू कैसे करें? I'll give you a bit of a hint. You just need this, और कुछ नहीं चाहिए। Just this one definition के साथ you solve the whole scary वाला question. करें शुरू अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। Shall we start this question? साथ में करें और do you want time to try it? I can give you a minute to try it और I'll start solving it. जो आप बोलो हम लोग करेंगे। Okay? So let's wait. I'll wait for some people to tell me approach. इसका क्या करें पहली बार? Let's start with you. अच्छा ठीक है, चलो कर लेते हैं, शुरू करते हैं। 1 minute आयुष, ठीक है। आयुष will take a minute, बाकी सबके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है? I'm kidding. आयुष कान बंद कर लो 1 मिनट के लिए, ठीक है? I'm gonna come back on screen. Yeah, okay, hold on. अरे यार इसका वीडियो is funny. It keeps getting weirdly pixelated. There you go. I'm back up. All right. आयुष you try. देखो पहला ऑप्शन बोल रहा है if empirical formula of compound is P3Q4 then empirical formula of compound 2 is P3Q5.
अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला और मास का क्या रिलेशनशिप है? देखो, आई हैव वन मोर डेटा पॉइंट व्हिच इज मास बाय मास परसेंटेज इज 40:60 हियर एंड 44:55.5. व्हाट डू आई मीन? व्हाट डू आई मीन हियर? यहां पे देखो, दिस इज कंपाउंड 3, ओके, दिस इज कंपाउंड 2. यही दोनों डेटा पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं. ओके, सो द मास ऑफ P by mass of Q is 4/6. Is that what this means? We'll see. देखते हैं इसका क्या मतलब है. So we can get the ratio of these masses of P and Q. Okay, molar masses. M is basically molar mass. Use that and then substitute it back here, and then you see कि अच्छा, अगर मुझे same ये मिल रहा है, then this option is correct. I'm going to repeat that one more time. I'm going to repeat that one more time. Okay. अगर हमको एक रिलेशनशिप मिला बिटवीन दीज गाइज, ओके, फ्रॉम दिस थिंग कि ओके, ये कंपाउंड है P3Q4 कंपाउंड बन गया. नाउ यूजिंग P3Q4 इट मस्ट हैव द मास रेशियो ऑफ P टू बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60 व्हिच इज 100. बिकॉज ये सवाल में दिया हुआ है. आई नो यू डोंट सी द डेटा पॉइंट, आई विल शो इट यू वंस. फिर से देखो, ये वाला पॉइंट मैं यूज कर रहा हूं. आई एम यूजिंग दिस डेटा पॉइंट. वेट परसेंटेज ऑफ P is mass of P divided by mass of compound, right? Now I am considering 1 mole of compound. That's the basis for all of these questions. ठीक है? So then I can say कि अच्छा, then this expression makes sense and you get this relationship between the molar mass of P and Q. Is this okay? You like it, Bhagya? That's beautiful. That's beautiful. Do you understand क्या किया है मैंने? Any doubts in this? If you have a doubt in this, tell me. If you don't have a doubt in this, then भाई बहुत आसान है. Everything is very direct. It will take some time, यार. I'm not lying to you. It will take time to solve it, but बहुत आसान है. Process. Step 1, Step 2, Step 3 आराम से होगा. कोई डाउट है? No doubts. Okay. Anybody else? Ayush, Saurabh, Naveen, Sarvan, Gupta साहब. Any doubts in what I've said so far? बताओ अगर कुछ है तो. Okay. So why did I do it this way? Because I am given in the question that this is the mass percentage of P. ठीक है? Mass percentage of P and using this empirical formula P3Q4 मतलब there will be 3 of P and 4 of Q. So this is the relationship that I get between this. So अगर ये relationship है और मैं same चीज इसमें डालूं, now look at this next part. It's beautiful. I love math so much. It's बहुत प्यार से होता है. देखो, ये 3PQ5 में भी यही same चीज होनी चाहिए. मतलब कि 3 mass T that mass of P divided by 3/5. क्यों? This is the mass of compound, right? Compound. So इसमें should be equal to how much? Same. This should be equal to 44.45 divided by 100, right? 1,100. यही होना चाहिए. जाहिर है, it should be यही होना चाहिए, right? अरे हम लोग मैथ ही तो कर रहे हैं. केमिस्ट्री के नाम पे मैथ ही कर रहे हैं. That's why I teach physical chemistry. Physics, chemistry, math सब सेम है. Do you see this? If it is equal to this, then ये statement सही है. If this percentage is not equal to 44.5, then ये statement गलत है. Okay. So what do I do? I am substituting MQ to be equal to 9/8 MP. यही मैंने यहां पे लिख दिया है. Now once you do this, whatever it is, ये जो भी नंबर आता है ये 44.4 नहीं है. It is not this. अगर करना है तो ट्राई करके देख लो यार. 24 divided by 24 plus 45 आता है, तो ये बन जाता है 24 divided by 69. Okay, and this is 30% कितना है? 24 into 3 is 72, right? 24 into 3 is 72, तो 30 से थोड़ा ज्यादा होगा. Whatever it is, like 33, 34 होगा, 33, 34% होगा. But it's not 44%. मतलब ये पहला ऑप्शन हो गया गलत. Exactly सम्यक. Absolutely. हे सुजाता. सम्यक. सुमित ठाकुर 72 बोल रहे हैं. 72, अच्छा 24 into 3 72. हाँ, sure. So उससे थोड़ा ज्यादा होगा. Want the exact number? Let's do that. 24/69 कितना होता है? 34.7%. तो ये वाला हो गया गलत. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. अब तो बस है हलवा, राइट? नाउ इट्स वेरी डूएबल. वो कर लिया तो बाकी भाई नींद में कर लोगे तुम लोग. कैसे? लाइक दिस. भाई भाई आनंद बोले हिंदी में बात करो. दिस मच इज ओके. दिस ओके, समझ में आ रहा है, राइट? इफ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 3 इज P3Q2. फिर कुछ और देख लेंगे. पहली चीज एमपी का रेशियो बना लेते हैं, देन वी लुक रीड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. पहले ये कर लेते हैं. कुछ बोल रहा है 20 एटॉमिक वेट ऑफ क्यूब 40. कर लेंगे यार, कर लेंगे. लेट्स डू दिस. P3Q2 मतलब 3MP by 3MP plus 2MQ should be equal to 40/100.
क्यों? अगेन दिस इज कंपाउंड 3, फिर से दिखाता हूं आपको, देखो कंपाउंड 3 है, सेम चीज हम लोग यूज कर रहे हैं. लेट्स गो बैक टू दैट वन व्हिच इज राइट हियर, राइट? सो 3 mp by this is 40 by 100. नाउ द रेशियो, द रिलेशनशिप दैट यू गेट इज व्हाट? दिस इज 2 by 5. 2 by 5 यानी कि 15 mp minus 6 mp इक्वल टू 4 mq, है ना? नहीं 4 नहीं, विल बी इक्वल टू 8 mq, यानी कि 9 mp is 4 mq. एक मिनट, 8 या 4 सोचना, 4 ही था, सही था, 4 mq, my bad. So this is the relationship I get right now. Now with this B is correct, Samyak is saying B is correct. देखते हैं बहुत जल्दी से देखते हैं अभी. 9 mp is 4 mq. So अगर mp is 20, अच्छा, now I'll substitute 20 into this, then mq is 45. देखते हैं, तो मतलब 9 into 20 180 by 4, 185, 4 तो होता है होता है 45. तो yes, this is absolutely correct, absolutely correct. Good job Samyak, जल्दी से करते हुए इस सवाल को. Yes, this one is correct. B is correct, absolutely right भाग्य, बिल्कुल सही. अगला ऑप्शन देखते हैं. देखो नाउ इट्स वेरी डूएबल. एक बार जेईई एडवांस के सवाल हमेशा ऐसे होते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं यार, पढ़ो अच्छी बुक्स, यू गॉट टू रीड Zoomdal, you got to solve questions from Zoomdal to do questions like this. एक बार अप्रोच आ गया ना तो भाई सवाल बहुत मजा आता है करने में. दिस वन ऑफ दोस क्वेश्चंस, राइट? तीसरा ऑप्शन, इफ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 2 इज PQ. अब देखो कंपाउंड 2 में रेशियो अलग है, कंपाउंड 2 का रेशियो है ये, अब हम लोग देख रहे हैं ये 44.4 और 55.6. ओके, सो अगर ये रेशियो गलत दिखा दिया, नहीं ये वाला तो ठीक है, ये पहले दिखा चुके थे, दिस इज दिस वन, सॉरी. ठीक है, अगर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 2 इज PQ, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 1 इज व्हाटएवर. ठीक है, देख लेंगे उसका मास रेशियो हमने निकाल लिया, यहाँ पे 50-50 लिखा था. सो MP by MP plus MQ is 44.4, मतलब almost 4 by 9 लिख लो. Now this is the small math thing you need to do. 44.4% यानी कि 4 by 9. This will make your life easy. और या तो आप जानते ही है, because you've done this, you've done enough of maths, fraction and all to understand this 4 by 9. अगर ये 4 by 9 ले लो, then what you get is 5 MP is 4 MQ. कैसे भाई? देखो 9P minus 4P is equal to 4Q, उससे निकलता है ये. ठीक है, कूल, ये रिलेशनशिप मिल गया. हाँ, तो नाउ विद दिस कैन आई गेट बैक टू दिस. देखो लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला P5Q4. P5Q4 मतलब 5 MP प्लस डिवाइडेड बाय 5 MP प्लस 4 MQ शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू, एंड आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दिस हियर. क्यों? 4 MQ इज इक्वल टू 5 MP, तो यही चीज हमने डाल दी यहां पे. तो ये अगर इफ दिस इज इक्वल टू 50 by 100 then it is correct, and it is, ये सही तो है. This is 1 by 2, no, डायरेक्टली है ये 1 by 2. अगर 1 by 2 50 by 100 which is the same as this, ये वाला भी सही. Yeah, I know man, life is like this भाग्य, क्या करें. Yeah, we got to make do with what we've got. ये वाला सही निकला. लास्ट ऑप्शन देखते हैं, 1 मिनट बाकी है 12 बजने में. Nah, it's all right, we'll spill over by half a minute or so. Now the last वाला, atomic weight of P and Q दिया हुआ है. This is throwing you off a little bit कि ये कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं. दिस इज सेम एज द लास्ट वंस. इस वाले को हम लोग बाद में देखेंगे. नाउ बाय दिस टाइम यू रियलाइज कि इफ यू आइडेंटिफाई दिस, ये वाला सेक्शन, देन यू कैन फिगर दिस आउट. तो हम लोग स्टेटमेंट, क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट बाद में देखेंगे. लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट. सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज P2Q. P2Q मतलब 2 MP डिवाइडेड बाय 2 MP प्लस MQ इज इक्वल टू हाफ. क्यों? ये 50-50. फिर से गोइंग बैक, देखो 50-50 कहां से आया, कुछ नया नहीं है. कंपाउंड 1, दिस इज 50-50. ओके, यहीं से मैं ले रहा हूं. Where is that compound 1? Let's go back to it. Okay, ये वाला नहीं, अगला वाला, right? Hold on, this is it, right? So you get 2 MP equal to MQ relationship. ठीक है, now comes D. Yes, 2 MP equal to MQ सही आ रहा है. 1 by 2 मतलब 4P plus minus 2P equal to Q, मतलब कि 2P equal to 2 is equal to Q. यही मैंने यहाँ पे लिखा है. So now I substitute the first part of the question. If atomic weight of P and Q is 70 and 35, then ये होता है. अब इसको वेरीफाई करते हैं. अगर हम लेते हैं इसका मास टू बी 70, देन भाई साहब इसका मास हो गया 140. ये तो सही नहीं है. इफ दिस नॉट करेक्ट, देन ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट. भाग्या ऑन फायर, भाग्या ऑन फायर. हाँ सम्यक, हो सकता है. योर maybe yes, correct, absolutely. You guys are brilliant man. I like teaching here. So बहुत जल्दी आप लोग चीजें पकड़ लेते हो. खैर, that's it. That's all I have planned for you today. You are an awesome crowd. I know बिल्कुल last many people are on fire. Yeah, थोड़ा last minute session था, but we solved just 7 questions. Can you believe that? 7 सवाल 1 घंटे में, but इतने प्यारे तरीके से किए ना
You will never have a doubt in these concepts ever in your life. I'm sure of that. मुझे तो बहुत मजा आया इसको करने में. I hope you enjoyed this as well. We'll meet again at 12:30 for solid state. और फिर उसके बाद हर सैटरडे हम लोग शाम को मिलेंगे. और we'll see. अगर ये टाइम ज्यादा पसंद है उस टाइम मिलेंगे. जो भी आप चाहो. Leave comments on this video. Share with your friends. जो भी feedback है please दीजिए. I teach Chem. That's my ID on Discord as well as Telegram. Obviously, there is, I post status updates on Telegram about my sessions that come up either on the JEE or the NEET channel. I teach on the NEET channel as well. And if you want updates, as usual, description mein, you've got the Aakash Byju's JEE channel, right? Aakash JEE channel from Telegram. You'll get regular updates as well. मैं इसके notes तुरंत आपको share कर दूंगा. Yeah, that's my style. Right after this, I will share the notes with you. And we'll do that for all sessions. मतलब कि मेरे सेशन में आप बस आराम से सुनिए, solve questions, have fun, and we'll learn together. ठीक है. अगला सेशन 12:30 पे है. Hey Rao, solid state. What is Discord? That's a good question. That's a good question. ठीक है. 12:30 में मिलते हैं solid state में अगर आप करना चाहते हो तो मेरे साथ. See you. I had brilliant time teaching you all. I hope you had fun too. मिलते हैं 12:30 बजे.